Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, your English instructor Hasnain, and once again I welcome you people again to my video. Today we are going to be doing another sequel of our last videos, as I did, as you people remember, verbs. If you haven't watched the other parts of my videos about verbs, so do watch that, because as you don't skip to class 2 directly, you go and watch class 1 first of all. So just like that, first of all watch my chapter 1, then chapter 2, then chapter 3, and then come to this video. So let's get started for the people who have watched those videos. So let's get into the topic. First of all, I have to say one thing before this. I say it all the time and I'm gonna say it again. Lots of people take English so much hard. They take it on their heart and they want perfection. So first of all thing, in this earth, the earth is full of imperfections. Nothing is perfection. So one thing I would like to say to those people is that wake up to reality. There is no perfection for us. Only Allah Almighty is perfect. So we have to learn. We have to grow. How will we grow? How will we learn? It is by slowly. We don't directly go from floor 1 to floor 2. We go by stairs one by one and we reach to our floor. So just like that, this is all, and let's get into the topic. So first of all, we are going to be doing one of the least topics that are quite unknown to most people. Most people don't know about these topics. So I'll tell you about these topics. Now linking verbs, people know about it, but compound verbs, lots of people don't know. Even they use it, but they don't know what is the meaning of this. So let's get into the topic. Now what are linking verbs and what are compound verbs? Now linking verbs is a type of verb. Linking verbs are verbs that connect the subject to give information about the subject or to give details about the subject to us. It does that. Now how, you may ask? Now we say that I was smelling the flower. Now here smelling is used as an action verb. As what? An action verb. Now let's use it as a linking verb. Hasnain smells like flowers. Hasnain से फूलों की खुशबू आ रही है. Now here it is used as what? A linking verb. I will give you another example. I am doing my work. Here it is used as a action verb. कहो ना अपने साथ, action verb. Now how will we use it as a linking verb? Salma has been a good worker. Here we used doing की जगह हमने worker लगा लिया, because doing is an action. We cannot use it for showing somebody's detail. Now there are some linking verbs that we cannot use, like watching. No, we cannot use it. Like there are many other ones that we cannot use, but we should try, but we can't. It is simply the thing that we cannot use it. Now the bottle is red. I'm drinking water from the bottle. अब ये यहाँ पर drinking is the action verb. Now how will we say it as a linking verb? Hasnain is drinking from his water. Hasnain looks drunk. हम इस तरह कहेंगे. Hasnain looks non-thirsty. अब एक तरफ मैं कहूँगा कि I am thirsty, I am feeling ये. So हम लोग इस तरह यूज़ करेंगे कि हम लोग शो करेंगे the somebody's attributes. अब मैं कहूँगा I love working. He is a worker. Hasnain is a worker. Now यहाँ पर worker जो है हम लोगों ने linking verb है. I love working. Working यहाँ पर action verb है. I am teaching. Hasnain is a teacher. Teaching यहाँ पर जो है action verb है. Hasnain is a teacher. Teacher एक attribute है. Attributes हम linking verb से करेंगे. But जो सबसे best example मैं आपको दे सकता हूँ, that for example, the bear smelled the boy and left him alone. The bear smells like mushrooms. बेयर ने या भालू ने लड़के को सूंघ के उसे छोड़ दिया, बिकॉज ही थॉट कि वो मर चुका था. वो अपनी जान बचा के भाग गया बच्चा. अब दूसरी तरफ हम कहेंगे कि उस बेयर से पेड़ पौधों की खुशबू आ रही थी. हम लोग इस तरह कहेंगे, या पौधों की खुशबू आ रही थी, या फिशेस की आ रही थी. हम लोग इस तरह कहेंगे, या हनी वगैरह जो लफ्ज़ आप कहेंगे उसकी तरह. एक तरफ स्मेलिंग एक एक्शन था, एक तरफ स्मेल एक एट्रीब्यूट था जो कि शो कर रहा था डिटेल्स ऑफ आवर मेन कैरेक्टर और द सब्जेक्ट. लिंकिंग वर्ब्स में बहुत कुछ नहीं है, और ना हम लिंकिंग वर्ब्स इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट जब भी इस्तेमाल करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं. नाउ कंपाउंड वर्ब्स. नाउ व्हाट आर कंपाउंड वर्ब्स? सबसे पहले इसे देखते हैं. कंपाउंड वर्ब्स, टू कंबाइंड वर्ड्स दैट मेक अ न्यू वर्ब विद अ न्यू मीनिंग. एक नया मीनिंग देता है एक नए वर्ब के साथ. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करें. लाइक बेबी एक अलग है और सिट एक अलग है.
Sit is a verb and baby is a noun. When we combine it, so it becomes a compound verb. Babysit. Are you a babysitter? He is babysitting him. Why are you babysitting his child? Why are you babysitting your sister's son? बेबी सिटिंग, इसका अलग अगर हम लोग कर दे सिटिंग का तो मतलब है, पर हम लोग कहें व्हाई आर यू बेबी हिम, इसका मतलब नहीं है. हाँ, व्हाई आर यू सिटिंग विद हिम, आप उसके साथ क्यों बैठ रहे हो. अब इसका मतलब है बिकॉज इट इज़ अ वर्ब, बट बेबी इज़ नॉट अ वर्ब. पर जब हम लोग एक दूसरे को मिलाते हैं, क्या आप सोचेंगे कि लाइक बेबी को बिठाना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. किसी का ख्याल रखना. व्हाई आर यू बेबी सिटिंग हिम, आप उसका ख्याल क्यों रख रहे हो. बट ये ज़्यादातर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि बेबी सिटिंग. इस तरह है मेल्ट डाउन, गेट आउट, गेट इन, गो आउट, ड्रिंक अप, फिल अप. Like if there are like many bottles, so I say fill up those bottles. अब हम लोग इस तरह नहीं कह सकते कि fill the bottle, क्योंकि वो एक के लिए होता है. fill up those bottles ज़्यादा के लिए हम कह सकते हैं. अब इस तरह melt, तो melt का मतलब है पिघलना. melt down, पिघल चुका है, पिघल गया, चला गया. get out, निकल जाओ यहाँ से. get का मतलब है आओ, या get का मतलब है लेना, और out का मतलब है बाहर. अब इसका कोई मतलब है गेट नहीं है मतलब, यू गेट नहीं है मतलब, आप लें, क्या लें, यू गेट, यू टेक, इसका कोई मतलब नहीं है. टेक डाउन का मतलब है दैट यू टुक हिम अप, लाइक आपने उसे जो है हरा दिया. आई टुक डाउन हिम एंड देन आई वोन द मैच. या पाकिस्तान टुक डाउन कोई सी भी दूसरी कोई क्रिकेट की हो, सो लाइक पाकिस्तान टुक डाउन ऑस्ट्रेलिया इन द मैच, हम इस तरह भी कह सकते हैं. अब मल्टीपल हम लोग कह सकते हैं, टुक डाउन, मेल्ट डाउन, गेट आउट. अब आउट का अपना मतलब है, गेट का अपना मतलब है. हाँ, हम ये सब कह सकते हैं, यू आउट, आउट, हम ये कह सकते हैं आउट. क्लास के अंदर टीचर अक्सर कहते हैं ना आउट आउट, जब बातें कर रहे होते हो और काम नहीं कर रहे होते हो वक्त के ऊपर. अक्सर बैक बेंचर्स के साथ ऐसा होता है, मेरी क्लास में मैं देखता रहता हूँ. वो बीच में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं तो बस टीचर कहते हैं आउट 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 आउट. अगर हम लोग इसके अलावा अगर देखें, कंपाउंड वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ नए मीनिंग्स, नए वर्ड्स बनते हैं. इट इज़ लाइक इट्स सेल्फ अ वर्ड, अ न्यू वर्ड दैट इज़ बोर्न एवरी सिंगल टाइम यू मेक वन ऑफ दीज, यू यूज़ वन ऑफ दीज. और इनके ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेंगे. ऐसे मीनिंग्स होती हैं जो कि आप बना नहीं पाते हो, तो उनके लिए बना है कंपाउंड वर्ब्स. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कंपाउंड वर्ब्स बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट and it will help you people. And this is all. So if you want, so you should try. Lots of people ask me how can we be fluent, how can we do this. कुछ लोग कहते हैं कि वोकैबुलरी से शुरुआत करें, ग्रामर से करें, रिटर्न से करें, किससे करें. मैं कहता हूँ भाई छोड़ो ये सब कुछ, start speaking. When you start speaking, you will be able to understand it. You will be able to speak it. आप खुल के बोल पाओगे, जो आपको बोलना होगा आप खुल के बोल पाओगे लोगों के सामने. Like this is how you will be able to learn and speak English language fluently. When you don't try to speak, you will not be able to speak. You will be like वो एक मुरझाया किस्म का कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर की तरह. तो आपको क्या करना है, आपने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, लोगों के सामने करें. इस सब के अंदर कॉन्फिडेंस, फियर ख़त्म हो जाएगा. And that's how you will do it. So go in front of people and talk. That's it. This is all for today. Thank you so much for being with me. And that's all. Thank you so much and Allah Hafiz.